Students, according to given video, I am going to explain a new concept of physics dated class 9. The name of concept is the law for conservation of momentum and also Newton's third law of motion. Law for conservation of momentum for explanation of given law. Suppose two different types of body, name of first A and name of second B. If mass of A is m1 and mass of B is m2, if in same direction on a same line, velocity of A is u1 and velocity of B is u2. If magnitude of u1 is greater than u2, ध्यान देना, law for conservation of momentum, you are completely confirmed for momentum. इस लॉ को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी है, नेम ऑफ फर्स्ट ए, नेम ऑफ सेकंड बी. In given example, both are moving in same direction with different velocity. Velocity of A is u1, velocity of B is u2. एक स्पेशल केस है कि वैल्यू ऑफ u1 is greater than u2, यदि A का स्पीड B के स्पीड से अधिक हो. अगर A का वेलोसिटी B के वेलोसिटी से अधिक हो, then after a particular interval of time, then after a definite time, there is a collision create between them. तब ऐसी स्थिति में, इस विशेष स्थिति में, इस विशेष कंडीशन में ये दोनों के बीच एक डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, collision. And suppose after collision velocity of A becomes v1, there is no any types of change in its mass, and velocity of B becomes v2. ध्यान देना थोड़ा सा. Before collision velocity of A is u1, before collision velocity of B is u2, after collision velocity of A becomes v1 and velocity of B becomes v2. यहाँ collision ने A और B का वेलोसिटी चेंज किया. A का वेलोसिटी u1 से चेंज होकर के v1 हुआ और B का जो वेलोसिटी है u2 से चेंज होकर के v2. So due to collision, velocity of both bodies changes. In this case,
m1 u1 represent initial momentum of A. ध्यान देना, m1 mass of A and u1 initial velocity of A. So m1 u1 known as initial momentum of A, and m1 v1 represent final momentum of A. m1 u1 known as momentum of A before collision, and m1 v1 represent momentum of A after collision. So m1 v1 minus m1 u1 known as change in momentum for A. इस तरह से m1 v1 माइनस m1 u1 है जो A के मोमेंटम में होने वाला चेंजिंग है। यह मोमेंटम जितने टाइम में चेंज हुआ, if total time taken represented by t, then m1 v1 minus m1 u1 divided by t, that's called the rate of change in momentum of A. A का मोमेंटम चेंजिंग रेट m1 v1 minus m1 u1 divided by t, the rate of change in momentum for A. Suppose at the time of collision, yeah, due to collision, force applied by A on B is known as F1. Force applied by B on A represented by F2. ध्यान देना यहाँ पर जिस फोर्स ने दोनों का मोमेंटम चेंज किया, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वह फोर्स ए के द्वारा बी पर अप्लाई हुआ जिसको F1 माना गया है, और बी के द्वारा ए पर अप्लाई हुआ जिसको F2 माना गया है। F1 is known as force of action and F2 is known as force of reaction. ए के द्वारा बी पर जो फोर्स अप्लाई हुआ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन या एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट, F1 that force which act on B by A के द्वारा B पर अप्लाई फोर्स, and F2 force applied by B on A, that's known as F2. According to Newton's third law of motion, F1 and F2 both are same in magnitude but opposite in direction. न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया कि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन जितना फोर्स ए के द्वारा बी पर अप्लाई होगा उतना ही फोर्स बी के द्वारा ए पर अप्लाई होगा। ए के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ बी पर, that force is known as force of action, and B के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इन पर, that force is known as reaction. So according to Newton's third law of motion, force of action and force of reaction both will be same in magnitude. दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और इस तरह से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर F1 का साइन आप पॉजिटिव देते हैं तो F2 जो है नेगेटिव साइन देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन बोथ विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. So Newton's third law of motion also known as law of action and reaction. इसलिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिस फोर्स ने ए का मोमेंटम चेंज किया दैट फोर्स हियर F2. So value of F2 that will be equal to m1 v1 minus m1 u1 divided by t. Similarly, m2 v2 known as final momentum of B. It means
momentum of V after collision m2 u2, momentum of V before collision. So m2 v2 minus m2 u2 known as the change in momentum of V, and m2 v2 minus m2 u2 divided by t, that's called the rate of change in momentum related V. So m2 v2 minus m2 u2 divided by t is known as या equal to f1. f1 जिस फोर्स ने b का मोमेंटम चेंज किया, जिस फोर्स के कारण b का मोमेंटम चेंज हुआ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन. f2 जिस फोर्स ने a का मोमेंटम चेंज किया. सो f2 is equal to m1 v1 minus m1 u1 divided by t, and f1 is equal to m2 v2 minus m2 u2 divided by t. On the basis of Newton's third law of motion, putting the value of f1 and f2, we see that according to equation first, value of f1, it means m2 v2 minus m2 u2 divided by t, that's equal to negative sign m1 v1 minus m1 u1 divided by t. If t cancel both sides, then m2 v2 minus m2 u2, that's equal to minus m1 v1 minus minus plus m1 u1. So m1 u1 plus m2 u2, that's equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the final equation. So according to law for conservation of momentum, we see that if a direct impact or collision create between two different types of body, then sum of initial momentum m1 u1 represent initial momentum of V, m2 u2 represent initial momentum of V, m1 v1 represent final momentum of V, and m2 v2 represent final momentum of V. So according to law for conservation of momentum, the initial sum of initial momentum, that will be equal to sum of final momentum. That's all.